Hello dear students, today we will solve question number 7 to 10 of exercise 2K. Okay, आज हम exercise 2K के question number 7 से लेकर 10 तक solve करने वाले हैं। सबसे पहले question number 7. There are 622 pages in a notebook. How many pages are there in 165 such notebooks? एक नोटबुक में 622 पेजेस है। एक नोटबुक में 622 पेजेस हैं। तो ऐसे 165 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, एक नोटबुक में 622 पेजेस, तो 165 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट वी विल राइट हियर solution pages in one notebook. Okay, we will write here pages in one notebook is equal to 622. Okay, pages in one notebook is equal to 622. So pages in 165 notebooks, so हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेजेस इन 165 notebooks equals to 622 multiplied by 165. Okay, पेजेस इन 165 notebooks फाइंड आउट करने के लिए हमें 622 multiplied by 165 को सॉल्व करना होगा। ओके, now we will do multiplication here. 622 multiplied by 165. Okay, first of all we will multiply 622 by 5. Okay, so 5 twos are 10, 10 is 0 here, 1 carry. 5 twos are 10, 10 plus 1 11, so 11 is 1 here, 1 carry here. 5 6 are 30, 30 plus 1 31, so we will write here directly 31. Okay, multiplication by 5 has completed. Now we will multiply 622 by 6, and 6 is in tens place, so that's why we will give 1 0 of tens place. Okay, now we will multiply 622 by 6 first. So 6 twos are 12, so 12 is 2 here, 1 carry here. Okay, सबसे पहले तो हम ये जो है 5 से जो मल्टीप्लाई करके जो कैरी आएगी उनको इरेज कर देंगे। 6 2s are 12, 2 here, 1 carry, then 6 2s are 12, 12 plus 1 13, so 13 is 3 here, 1 carry, then 6 6 are 36, 36 plus 1 37, so we will write here 37. Now multiplication by 6 has also completed, then we will multiply 622 by 5. Okay, and we will erase the carry first. 1 2s are okay, see this one is in 100 place, so that's why we will give 2 zeros. Okay, ये जो 1 है 100 place है इसलिए हम 2 zeros दे देंगे। Okay, then 1 2s are 2, 1 2s are 2, 1 6 are 6. Okay, we got here 3 partial product. Now we will add these 3 partial product. Okay, 0 plus 0 plus 0, 0. 1 plus 2, 3, 3 plus 0, 3. Then 1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6. Then 3 plus 7, 10, 10 plus 2, 12. So 2 is 2 here, 1 here. 1 plus 3, 4, 4 plus 6, 10. We will write here directly 10. It means we got here ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh. 1 lakh 2,630. Okay, it means here we will write answer
Hence, there are there are 1,02,630 pages. 1,02,630 pages in 165 notebooks. Okay, hence there are 1,02,630 pages in 165 notebooks. It means 165 notebooks में total 1,02,630 pages होंगे. Understood? I hope you understood. So please note question number 7 and its solution in your notebook. Write fast. Now question number 8. In question number 8, a rack can hold 1,850 books. How many books can be kept in 460 such racks? Students, एक रैक में 1,850 बुक्स रखी जा सकती है. ओके, एक वन रैक में 1,850 बुक्स रखी जा सकती है. तो ऐसे टोटल 460 रैक्स में कितनी बुक्स रखी जा सकेगी वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, वन रैक में मींस एक रैक में 1,850 बुक्स रखी जा सकती है. तो ऐसे 460 रैक्स में कितनी बुक्स रखी जा सकती है. सो वी विल सॉल्व हियर. सॉल्यूशन, number of books number of books number of books number of books kept in one rack equals to number of books kept in one rack equals to 1,850. Okay, वन रैक में 1,850 बुक्स रख सकते हैं. तो नंबर ऑफ बुक्स kept in 460 racks. Number of books kept in 460 racks equals to 1,850 multiplied by 460. Okay, 1,850 multiplied by 460 solve करेंगे. 1,850 multiplied by 460. Okay, now we will solve. First of all, we will multiply 1,850 by 0. So 0 zeros are 0, 0 5s are 0, 0 8s are 0, 0 1s are 0. Okay, multiplication by 0 done. Now by 6, and 6 is in tens place, so that's why we will give 1 0. 6 zeros are 0, 6 5s are 30, so 30 is 0 here, 3 carry. 6 8s are 48, 48 plus 3 51, so 51 is 1 here, 5 carry. 6 1s are 6 plus 5 11. Okay, then we will multiply 1,850 by 4, and 4 is in hundreds place, that's why we will give 2 zeros. Okay, now 4 zeros are 0, 4 5s are 20, 0 here, 2 carry. 4 8s are 32, 32 plus 2 34, so 34 4 here, 3 carry. 4 1s are 4 plus 3 7. Now
we will add 0 plus 0 plus 0 0, 0 plus 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 plus 0 1, 1 plus 4 5, and 1 plus 8, 1 plus 7 8. It means 1,51,000. Okay, 1,51,000 books can be kept in 460 such racks. Hence, we will write here. Hence, 8,51,000 books can be kept in 460 racks. Hence, 8,51,000 books can be kept in 460 racks. Understood, students? I hope you understood. So please write question number 8 and solution in your notebook. Now question number 9 is, how many years are there in 4,56,250 days? Assume that 1 year equals to 365 days. Question number 9 में टोटल डेज 4,56,250 डेज दिए हुए हैं. सो 4,56,250 डेज में कितने इयर्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. Assume that 1 year equals to 365 days. 1 year में 365 डेज होते हैं. तो टोटल 4,56,250 डेज में कितने इयर्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स राइट हियर सॉल्यूशन. Total number of days. Total number of days equals to total number of days 4,56,250. Total number of days 4,56,250. Then number of days in 1 year. Number of days in 1 year. Number of days in 1 year 365. Okay, number of days in 1 year 365. So number of years. So number of years in 4,56,250 days equals to number of years in 4,56,250 days equals to 4,56,250 divided by 365. Okay, total 4,56,250 डेज में कितने ईयर हो गए ये फाइंड आउट करने के लिए हमें 4,56,250 को 365 से डिवाइड करना होगा. ओके, सो वी विल डिवाइड हियर. नाउ वी विल डिवाइड हियर. ओके, एंड बिफोर डिवाइडिंग वी हैव टू मेक टेबल ऑफ 365. ओके, सबसे पहले हम 365 का टेबल बनाएंगे. 365 1 जा 365. ओके, 365 2s are 2 5s are 10, 0 here, 1 carry. 2 6 are 12 plus 1 13, 3 here, 1 carry. 2 3 are 6 plus 1 7, means 730. Then 365 3s are 3 5s are 15, 5 here, 1 carry. 3 6 are 18 plus 1 19, so 19 is 9 here, 1 carry.
3 3 are 9 plus 1 10 is 1095. Then 365 multiplied by 4. 4 5s are 20, 0 here, 2 carry. 4 6 are 24 plus 2, 26, 6 here, 2 carry. 4 3s are 12 plus 2, 14. 1416. Then 60. Then 365 multiplied by 5. 5 are 5 5s are 25, 2 carry. 5 6 are 30 plus 2, 32. 2 here, 3 carry. 5 3 are 15 plus 3, 18. ओके, तो इस प्रकार से 365 का टेबल हमने 5 तक बनाया है. अब हम डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ वी विल अरेंज हियर 4,56,250 divided by 365. Okay, see here divisor has 3-digit number, so we will divide here 3-digit number, means 4 5 6 456 को पहले डिवाइड करेंगे. तो 365 ones are 365 minus 6 minus 5 1. 5 minus 6 not possible, so take group from here. Here we left 3, now here become 15. 15 minus 6 9. Okay, now these two we will bring here. Now here becomes 912. अब 912 को हम 365 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए 365 के टेबल में 912 तो नहीं आता है, बट उससे छोटा 730 आता है. 365 के टूज आर 730 minus 2 minus 0 2. 1 minus 3 not possible, so take group from here. We left 8, now here become 11. 11 minus 3 8, and 8 minus 7 1, and this 5 we will bring here. Okay, now here becomes 1825, and 1825 comes in 5 times in table of 365. So 365 5s are 1825 minus 5 minus 5 0, 2 minus 2 0, 8 minus 8 0, 1 minus 1 0. But here you can see in dividend there is 1 0 left. Okay, so we will bring 0 here. Now we will divide 0 by 365, and we know that 365 zeros are 0. 0 minus 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. It means we got here answer 1250. Okay, so thus we will write answer. Here is no space, we have to write after this division. Okay, but I am writing here. Thus there are 1250 years in 4,56,250 days. Okay, 4,56,250 days में टोटल कितने ईयर होंगे? 1,250 years होंगे. Understood students? I hope you understood. So please write this question also in your notebook. Now students, we will solve question number 10, and this is the last question. The product of two numbers is 85,284 if one of the numbers is 207. Find the other. Students, question number 10 में हमें दिया है कि दो नंबर का प्रोडक्ट मीन्स आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो है
85,284 और जिसमें से वन नंबर है 207, तो हमें सेकंड नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो फॉर दैट वी विल राइट हियर सॉल्यूशन the product of two numbers equals to 85,284. 85,284. Okay. One number equals to 207. One number equals to 207. The other number, तो अभी क्या करना है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो द अदर नंबर इक्वल्स टू 85,284 डिवाइडेड बाय 207। ओके, 85,284 को 207 से डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। ओके, बिफोर डिवाइडिंग वी हैव टू मेक टेबल फर्स्ट। सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। 207 1 जा 207, 207 2 जा 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 0 जा 0 प्लस 1 2 2 जा 4, then 207 3 जा 3 7 जा 21 and 3 2 जा 6, 207 4 जा 4 7 जा 28, so we will write 28. Why? Because जब हम 0 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, उसमें 2 मिलाएंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए हम 4 7 जा 28 डायरेक्टली लिखेंगे, then 4 2 जा 8, 207 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ओके, तो हमने 207 का टेबल 5 तक ही बनाया है, इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर पड़ेगी जरूरत 207 का टेबल अगर 5 से आगे भी हमें अगर नीड पड़ती है तो हम एट अ टाइम बना सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिवाइड, लेट्स अरेंज 85,284 divided by 207. Division has 3 digits, so we will divide 3 digits of 3. Okay, to 852. Now we have to divide 852 by 207. So you can see here in table of 207 828 comes, and 828 is less than 852. So we will take 207 4s are 828 minus 2 minus 4 not possible, 2 minus 8 not possible, take 4 from here 4, now here become 12, 12 minus 8 4, 4 minus 2 2, 8 minus 8 0, the next 8 we will bring here 248. Okay, so 207 से 248 को डिवाइड करेंगे तो 207 1 जा 207 minus 8 minus 7 1, 4 minus 0 4 and 2 minus 2 0. Then next number we will bring here. Now here becomes 414 and 414 comes in 2 times in table of 207. So 207 2s are 415 minus 4 minus 4 0, 1 minus 1 0, 4 minus 4 0. It means we got here 412 as answer. It means the other number, thus required number, thus the required number is 412.
तो हम फाइनली यहाँ लिखेंगे 10 द रिक्वायर्ड मींस अदर नंबर इज 412. इट मींस दूसरा नंबर कौन सा है? 412 है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? I hope you understood. So please write question number 10 and its solution also in your notebook. Okay. Complete fast. So students, here our exercise 2K has completed. Okay. In next period we will solve next exercise. That will be exercise 2L. Okay. अब हम next period में exercise 2L solve करेंगे. Bye.